decided by the factory manager itself as per the efficiency of worker। देखो एक एवरेज एफिशिएंसी वर्कर के अकॉर्डिंगली कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाने चाहिए। अगर कोई भी वर्कर उतना प्रोड्यूस कर देता है तो डेफिनेटली उसको अच्छे वेजेस मिलेंगे। अगर कोई भी वर्कर उससे ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो उसको एक्स्ट्रा वेजेस मिलने चाहिए। और अगर कोई उससे बिलो प्रोड्यूस करता है, वो जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं पीस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो वो उससे कम प्रोड्यूस करता है तो वो एक तरह से उसके लिए एक तरह का अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि हाँ ही शुड, यहाँ पे क्या है कि द वेजेस विल बी रिड्यूस्ड, है ना। तो वेजेस थोड़ी कम मिलने चाहिए जिससे कि उसको मोटिवेशन मिले कि वो भी उस तक, वो जो दूसरा वाला पर्सन जिसने उतना अचीव किया है, एक्स्ट्रा अचीव किया है, उतना वो भी अचीव कर पाए। आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल ओवर हियर। एक कंपनी है एबीसी, कुछ भी ले सकते हैं। द स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स्ड बाय द कंपनी इज 20 यूनिट्स पर डे। एक कंपनी ने 20 यूनिट पर डे का स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स किया है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर यूनिट। मतलब अगर 20 यूनिट्स कोई प्रोड्यूस करता है तो 10 रुपीज पर यूनिट के रेट से उसको मिलेगा 200 यूनिट्स। ओके, so if anybody who is producing more than 20 20 articles, more than 20 articles, the higher rate is rupees 11 per unit। मतलब 11 rupees उसको मिलेंगे पर यूनिट पे इंस्टेड ऑफ 10 rupees। If any person is producing whatever the standard target is less than that target, then definitely he will be given lower wage rate। So what is the wage rate? Lesser wage rate is rupees 9 per unit। अब 9 rupees per unit उसको मिलेगा। Now if first worker produces 20 unit, so definitely the wage will be 200 rupees, है ना। 20 unit multiply by 10, so 10 rupees per unit, so that's why 200 rupees। And the second worker who have produced 25 articles, it means what is the standard target? 20, and he has produced more than 20 units, so how much? 25, so that's why what is the higher rate over here? 11 rupees। So 11 rupees, so how much he'll get? 275 rupees he'll get। So that is a kind of motivation for him। Instead of getting 200, he is getting 275। Okay, now third worker is there who has produced 19 unit, which is less than the standard target fixed by the company itself। तो यहाँ पे 19 यूनिट इसने प्रोड्यूस किए हैं। सो हाउ मच? अब यहाँ पे अगर बिलो होता है तो कितना होता है? लेसर रेट पे 9 रुपीज पर यूनिट था, तो यहाँ पे इसको कितना मिलेगा? 19 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9, इट मीन्स 171 रुपीज। सो हेयर द वर्कर, थर्ड वर्कर हैज प्रोड्यूस्ड लेस देन द स्टैंडर्ड टारगेट फिक्स्ड बाय द factory manager। So it is a motivation for him कि there will be a time he should increase his efficiency so that he could produce more than 20 units। 20 units से अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है definitely he will be able to get 11 rupees per unit cost price। So ये उसको मिलेगा। एंड जो भी पर्सन इसमें मोटिवेटेड होता है, देखो जब भी those workers that want there is a need of more money, so definitely for the sake of money itself they will produce more। देखो कहीं हमेशा क्या होता है, हर इंसान की जरूरतें होती हैं, और जब जरूरतें होती हैं तो उनको वो अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? जहाँ पे वो वर्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उनकी एफिशिएंसी भी का हम फुलर यूटिलाइजेशन भी रह रहे हैं। हमने स्टैंडर्ड पहले से ही फिक्स कर रखे हैं कि आपका प्रोडक्ट इसी क्वालिटी का होना चाहिए, इसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और वेज रेट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम से क्या होता है कि
जो workers हैं that will be motivated to produce more units of article in a day so that they'll get higher rate than the regular rate given to the workers. So that is a kind of motivation to them. Now last is mental revolution. Mental revolution का मतलब क्या है कि this was the second principle of harmony, not discard technique. Here also the F.W. Taylor believes that there should be a congenial relation between the worker and foreman or factory manager. उनके बीच में जो रिलेशनशिप होने चाहिए वो अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए. जो उनका जो एटीट्यूड है, जैसे what I have explained in the principle also, the employer or the manager feel कि worker don't want to work, है ना. That is the usual thinking or the attitude of manager कि workers always dislike work. And what worker we feel कि manager is exploiting us. He is giving less wages to us and giving more burden. So that kind of attitude, there is a need to change the attitude of these people through the participation of workers in the in making planning of the organization, in making factory plans. They have to decide their own targets itself that I have explained over there. So in that way, the attitude of the worker will change towards the manager, and the manager's attitude should also be changed so that the worker will be treated humanly, because it is only the worker through which we can increase the productivity. Everything are non-living things ना, मशीनरी ये वो सारी चीजें हैं, कैपिटल भी है, but if those human resource, if they are not working properly, then definitely we cannot achieve our targets. We cannot produce more commodity at less cost. So there is a need to improvise the relation between, change the mental attitude of worker as well as managers, so that their relationship between the two will improve. There will be two-way communication. Without interruption, they can give the suggestion to the manager, and manager will also treat them as a part of organization, an important part of organization, because without that they cannot achieve anything. So that's why the harmonious relationship will always help any organization for the growth and success. So these are the technique that is adapted by F.W. Taylor. You have seen in all the techniques are based on the principle that he has given earlier. Only the 4 principle is given by F.W. Taylor, and these techniques are the measures through which we can accomplish those principles that is propounded by Taylor. Okay, I hope you have understood it. If you have any doubt regarding the topic, you can comment below the video. Thank you. Have a nice day.